सब लोग का नमस्कार है। वेलकम टू एल रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स। सो आज हम लोग एफसीयू फैन कॉइल यूनिट्स का बेसिक्स का बारे में देख सकते हैं। एज अ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर, एज अ बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर और टेक्नीशियंस, व्हाट आर द बेसिक्स हमको एफसीयू के बारे में समझने का। लेट्स सी। सो आज ये टॉपिक एंटर करने के पहले 4 क्वेश्चन हमारे साथ हम लोग पूछ सकते हैं। सो क्यों हमको एफसीयू के बारे में समझने का, वो दिखने के लिए कैसे दिखाएगा, ओके, किधर देख सकते हैं, एंड एज ए बीएमएस और बैक्स इंजीनियर्स इसका बारे में क्या क्या चीज़ हमको समझना पड़ेगा। ये इसका एक मैकेनिकल डिज़ाइन है एफसीयूज का, फैन कॉइल यूनिट्स का। ये फैन कॉइल यूनिट्स का एक फ़ोटो है, उसका इलेक्ट्रिकल पार्ट है। सो एज आई टोल्ड अर्लियर, फैन कॉइल यूनिट्स विल सप्लाई air to the dedicated rooms, example server rooms, BACS rooms. Okay, so in order to serve the air to the particular rooms है ना, हमको डक्स चाहिए ना। ये डक्स कैसे दिखाएगा, ये एक फोटो है। सो जैसे हम लोग पहले बोला, फैन कॉइल यूनिट्स, VAVs एंड ये की जो इसका सप्लाई एंड रिटर्न है डक्स है ना, फॉल सीलिंग के अंदर ही इंस्टॉल्ड है। ये दिखने के लिए कैसे दिखाएगा, एक एग्जाम्पल टिपिकल फोटो है। This is a fan coil units and this is a cooling coil, supply in the return line of the cooling coil. एक टिपिकल छोटा ग्राफिक्स है। सो हमको एफसीयूज को 2 कैटेगरीज स्प्लिट कर सकते हैं। एक फिक्स्ड स्पीड टाइप है, दूसरा मॉड्यूलेटिंग टाइप है। फिक्स्ड स्पीड टाइप में तो सेम लाइक अ नॉर्मल फैन, लो स्पीड, मीडियम स्पीड एंड हाई स्पीड। एंड मॉड्यूलेटिंग टाइप है तो मतलब 2 to 10 वोल्ट है। सो मतलब 0 to 10 वोल्ट है। 0 में ऑफ पोजिशन में हो जाएगा, 2 वोल्ट में है ना लो स्पीड में रन चालू हो जाएगा, 10 वोल्ट में एकदम हाई स्पीड में चालू हो जाएगा। सो ऑल दिस स्पीड कंट्रोल एंड ऑल्सो एक कूलिंग कॉइल का रिटर्न लाइन में है ना वाल्व एक्चुएटर इंस्टॉल है। सो इसको हम लोग 2 to 10 वोल्ट में कंट्रोल करेगा। ये दोनों का वोल्टेज एंड कंट्रोल वोल्टेज है ना सेट पॉइंट का बारह भी चालू हो जाएगा। अगर मान लो रूम टेम्परेचर इस 25 डिग्री एंड द सेट पॉइंट इज 22 डिग्री, इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट 22 डिग्री है ना, ये फैन एंड द कूलिंग कॉइल चालू होना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, एकदम हाई स्पीड में चालू हो जाएगा। एंड ऑल्सो है ना ये वाल्व एक्चुएटर है ना, इसको है ना एकदम कम पोर्शन में ये वाल्व एक्चुएटर को एकदम बंद करेगा। सो दैट है ना कूलिंग वाटर विल रिटेन हियर एंड वाट एवर हवा है ना ये फैन से आ रहा है, इसको कूल करके है ना बिल्डिंग का अंदर पर्टिकुलर रूम का अंदर ये भेजेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द टिपिकल एग्जाम्पल जिसका वो ये एफसीयू चालू हो जाए रन हो जाएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट है ना ये एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेट पॉइंट्स है। अगर ये रूम टेम्परेचर का क्या होने का एंड ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड मोड में ना कूलिंग एंड हीटिंग सेट पॉइंट क्या होने का। इसका अलावा टायरिस्ट भी है ड्यूरिंग द विंटर सीजन है ना, इन पर्टिकुलर रूम्स रूम टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी नहीं होने का। उसके लिए हम लोग टायरिस्ट हीटर्स यूज़ हो जाएगा। सो यूजिंग द PLCs एंड ऑल्सो DDC डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल्स है ना, ये पर्टिकुलर फैन कॉइल यूनिट्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट सिग्नल्स। ऑल द सिग्नल्स आर बीइंग कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट वे, डिजिटल इनपुट सिग्नल्स, एनालॉग आउटपुट सिग्नल्स। Okay, what are the digital input signals? That is run status, auto manual status is a digital input signal, and on off control is a EVO. Here it means it's a modulating type, 2 to 10 volt type. Okay, and all the valve actuator is a analog output type, so matlab 2 to 10 volt type. As I told earlier, if there is any fault occurs in the fan, okay, through the relays, through the flow switches है ना, we can take the status, that is digital input. And as I told earlier, for the thermostats है ना, thermostat का feedback channel is nothing but the analog input. Okay, these are the abbreviations or the acronyms which is used. Okay, apart from it we can raise the high temperature alarms also. We can even set the time schedules also. So this is the MCCB. All the electrical hardware signals are from the FCUs will be connected here. So if this is one of the photo of the fan coil unit. Okay, this is a fan coil unit. See the cooling coil. This is the supply line of the cooling coil, and this is the return line. See in the return line, valve actuator is being installed. Apart from the fixer and the modulating speed, we can also categorize the FCUs with heaters, FCUs with heaters, without heaters. So FCU, if there is no heater, means it is used in the places where only cooling is required, and FC with heater is used in the rooms in order to maintain the
temperatures. Okay. So these are the categories. Cooling coil and the fan speed control will come in the analog output category, and fan running status is a digital input signal, and the room temperature through the RTUs, through the communication we will take. And for the FCUs with heaters, the thyristor control output will also be an analog output along with the fan speed and the cooling coil. Okay, and fan running status will be a digital input signal. So as I explained the process earlier, अगर सेट पॉइंट को मेंटेन करने के लिए ना, for example set point is at 23 degrees Celsius. In order to maintain the temperature, the fan will operate. So if it is a 2 volt, it is the lowest speed, and if it is a 10 volt, it will be operating in the high speed. At the 0 volt, it will be in the off position. In order to maintain the temperature set point, so initially it will try to operate through the PID loop. Okay, and in order to maintain the heating as well as the cooling valve and the fan speed, PID loops will be enabled. So apart from this, there are important alarms and events are there. If fan fails to run, we need to raise alarm through the current relay. Through the flow sensors, we can monitor the fan, and if there is any high temperature cutoff alarm, we can raise. And if any communication failure happens, we can raise the alarms. And in order to communicate the fan coil unit from the field to the server, backnet routers will be used. If there is any failure occurs in the communication of the backnet routers, we can raise the alarm, and also temperature deviation alarm with the time delay we can keep. And also, each and every event we can monitor. If the fan is enabled or disabled, and if the heater is enabled or disabled, we can make as an event. थैंक यू सो मच. इफ कुछ क्वेरीज है आपको इसके बारे में तो हमको पूछ सकते हैं. फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस. थैंक यू.